Subject Strategic Financial Management, Class TY-BMS. Topic Shareholder Value Creation. Financial leverage is 1.40 times. Cost of equity 17.5%. Tax rate 30%. Capital structure of company. Equity capital of 160 lakhs. Retained earnings 140 lakhs. 10% debentures 400 lakhs. ये कंपनी ने अलग अलग सोर्सेस से कैपिटल रेज किया है और इसका कॉस्ट कितना है. इक्विटी का कॉस्ट है 17.5. रिटेन अर्निंग का कॉस्ट नहीं दिया है, लेकिन इसी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही रहता है. 10% डिबेंचर, ये 10% डिबेंचर का कॉस्ट है जो बिफोर टैक्स है, हम लोग को आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा. You can calculate the interest on debenture amount into interest rate 40 lakhs interest on debenture. What is the formula of financial leverage? In second year financial management we have done financial leverage. That is the relationship between EBIT and EPS. So EBIT upon EBT. This is the formula of financial leverage. That is given 1.4 times. Financial leverage is 1.4 times. We will make it common. EBIT upon EBIT minus interest. यहाँ पे हम EBT के जगह पर EBIT minus interest simplify करेंगे. EBIT minus interest 1.4 is equals to EBIT upon EBIT minus 40 lakhs. EBIT minus 40 lakhs is equals to EBIT. 1.40 EBIT minus 56 lakhs is equals to EBIT. 1.40 EBIT minus 1 EBIT, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 आपको लिखना है यहाँ पे 1 EBIT. ठीक है. 1.4 minus 1 0.40 EBIT. इसको आप डिवाइड कर देंगे. 56 lakhs को 0.40 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 140 lakhs. यानी हमने इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल लेवरेज के थ्रू EBIT निकाला. हमें इंटरेस्ट भी पता था, इंटरेस्ट हमें पता है कि 40 lakhs है, तो हम लोग ने फाइनेंशियल लेवरेज की फॉर्मूला से EBIT कैलकुलेट किया. ओके, नोट डाउन. 140 lakhs हमने कैसे निकाला? With the formula of financial leverage, we have calculated interest on debenture EBIT upon EBIT minus interest. ऐसी फॉर्मूला लगाओगे तो आपका EBIT आ जाएगा.
Any doubts how to calculate EBIT? Is it clear? फाइनेंशियल लेवरेज से हमने कैसे EBIT कैलकुलेट किया? EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट भी हमने खुद ही कैलकुलेट किया. डिबेंचर है 400 lakhs, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट 40 lakhs. Next is calculation of WACC. KD is cost of debt. Cost of debt का मतलब interest after tax. Interest into 1 minus T. Interest into 1 minus T. 10 into 1 minus 0.30, 7%. KE is equals to 17.5. ये दो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. ये जो इंटरेस्ट है ये डिबेंचर का इंटरेस्ट है. यहाँ पे आप देख सकते हो. दिस इज योर क्वेश्चन. 10% डिबेंचर लिखा है तो ये 10% बिफोर टैक्स है, इसको आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा. 10% को आफ्टर टैक्स करना है. टेन परसेंट इंटू 10 into 1 minus 0.70, 1 minus 0.30, 30% टैक्स रेट है. उसको क्या करेंगे आफ्टर टैक्स. 10% इंटू 1 minus 0.30, 1 minus टैक्स रेट. टेन इंटू 1 minus 0.30, 7%. KD means cost of debt after tax. KE 17.5. इक्विटी को हम आफ्टर टैक्स की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑलरेडी हम टैक्स पे करने के बाद ही हम अर्निंग्स में से डिविडेंड पे करते हैं. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होता है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. जब आप यहाँ पे WACC के लिए कॉलम्स बनाएंगे तो 5 कॉलम्स बनाने हैं. फर्स्ट कॉलम सोर्स, सेकेंड कॉलम अमाउंट, थर्ड कॉलम वेट्स, फोर्थ कॉलम कॉस्ट आफ्टर टैक्स, fifth column is third column and fourth column you have to multiply. Okay. Next is you have to take shareholders fund when you are doing proportion of equity. Don't forget retained earnings. You have to consider retained earnings as the profit of owners. Equity owners, they have a right on retained earnings. So you have to take combined equity and retained earnings. You have to take amount 10% debentures, 400 lakhs amount. Total capital structure or total capital employed is 700 lakhs. This is the proportion 0.4285, 0.5714, 300 upon 700, 400 divided by 700. This is proportion of shareholder equity and this is proportion of debenture. When you multiply the proportion with the cost, you will get the weighted cost. This is cost of equity. Now you must be thinking that if retained earning is not having any cost,
Retained earning will have the same cost what equity capital is having. If equity capital is having 17.5% cost, retained earning will have the same cost. Next is 0.5714 weight of debenture. Cost of debt after tax is 7%. It was 10% debenture. We have done it after tax 7%. After paying 30% tax, it is 7%. Now, if you multiply this 0.4285 multiplied by 17.5, you will get 7.4988%. Again, you are multiplying 0.5714 with 7. You will multiply. You will get 3.9998%. Next, make a total of both the columns, both the rows. You will get 11.4986%. This is WACC. Now the next step is to calculate NOPAT, net operating profit after tax. Nopat is equals to EBIT minus tax on EBIT. EBIT is equals to 140 lakhs minus 140 lakhs into 30%. One 40 minus 42 lakhs, 98 lakhs. Next step is economic value added. Formula is Nopat minus capital charge. Nopat minus capital charge, capital employed into WACC. 98 lakhs NOPAT, 700 lakhs capital employed. You can see in this table, we have capital employed total 700 lakhs and WACC of 11.4986. You can multiply these two. You will get 11.49% of 700 lakhs is 80.49 lakhs. 98 lakhs minus 80.49 lakhs. You have positive economic value added 17.51. Conclusion: if EVA is positive, company is generating wealth for its shareholders. Company is adding value to the wealth of value, adding the value to the shareholders. Note down. Is it clear to all of you?
Any doubts? Shall we start with second topic, market value added? The next topic is market value added calculations. इसकी calculations कैसे करनी है? सबसे पहले इसका theory समझते हैं. Market value added is the value that the current shareholders can get over and above the equity ownership represented by financial accounts. जो भी उनकी बुक वैल्यू है उसके ऊपर उनको उससे ज्यादा बुक वैल्यू से ज्यादा, अगर बुक वैल्यू से ज्यादा है तो मार्केट वैल्यू एडेड पॉजिटिव आएगा. यानी जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा अगर उनको वैल्यू मिल रही है, if the market price is above face value, that is called as market value added. आपको तो पता है कि मार्केट प्राइस नॉर्मली आप देखोगे किसी भी अच्छी कंपनी का उसके फेस वैल्यू से ज्यादा ही होता है और इसलिए उसको मार्केट वैल्यू एडेड बोला जाता है. अभी बहुत जन ने तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सोचा होगा, समझा होगा बहुत पहले. मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी के हैं जो फ्लोट हो रहे हैं मार्केट में, उसकी प्राइस, उसकी मार्केट प्राइस से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा. ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है. आई विल रिपीट. मार्केट, व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? दैट मींस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. सबसे पहले यही काम करना है. जो भी एनएससी पर प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस जो भी है एनएससी बीएससी का, उसको लेना है. कंपनी के कितने शेयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना है तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा. सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द बुक वैल्यू. देखो यहाँ पे टू डिराइव द मार्केट वैल्यू एडेड फॉलोइंग स्टेप्स. मल्टीप्लाई द टोटल ऑफ शेयर्स विद द करंट प्राइस. मल्टीप्लाई द प्रेफरेंस शेयर्स, ये कॉमन शेयर मतलब इक्विटी शेयर्स, और मल्टीप्लाई द टोटल ऑफ ऑल प्रेफरेंस शेयर्स. नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करना है. फिर दोनों को प्लस कर दो, कंबाइन द टोटल्स. इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उनको टोटल कर दो. Subtract the amount of capital invested in the business. The formula is number of common shares outstanding into market price per share, number of preference shares outstanding into market price per share, minus book value of invested capital. तो ये फॉर्मूला है, इसी को यहाँ पे यानी स्टेप्स में दिया हुआ है, 4 स्टेप्स में. अगर आपका ये आंसर फॉर्मूला किसका है, ये MVA, फॉर्मूला ऑफ MVA. जैसे वहां पे EVA था, यहाँ पे MVA है, मार्केट वैल्यू एडेड. ठीक है. This measurement should only be used if company stock is robustly traded on a stock exchange. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे जब इसका बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होता है, स्टॉक को बार बार परचेज और सेल किया जाता है, तो ही इसका MVA निकालेंगे. अदरवाइज वी विल नॉट कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू एडेड.
अगर ये रोबस्टली ट्रेडेड स्टॉक है जिसमें बहुत वोलेटिलिटी देखी गई है, फ्लक्चुएशन देखी गई है, तो ही इस स्टॉक का हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे। नोट डाउन दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नोट करना है एक ही, आपको सिर्फ यही नोट करना है, जो मैंने सिलेक्ट किया है ना वही नोट करो। ठीक है, एमवीए का फॉर्मूला नोट कर लिया। इस पे एक सम है लेकिन वो बहुत बड़ा है सम।